Suprabhat from Karad, and in today's episode, we will explore this beautiful city in Satara District. The city has been a center of cultural and religious importance due to the confluence of two very important rivers, Krishna and Koyna, at Preeti Sangam. It is also a city of mythological importance as it's believed that Sahadeva once lived here. Finally, Karad is also my friend Amit's hometown. So when we recently planned a road trip to Konkan, we decided to stop by in the city and explore it. Before we begin, a small request. Do like this video and subscribe to my channel for more such travel videos from across the world. Let's get back to Karad again. Karad की explorations खाने के साथ शुरू करते हैं. And not just any food, but the food that Karad is most famous for. So हम कराड पहुंच चुके हैं. This is Amit's hometown. और आते ही सबसे पहले खाना खाने का समय है. So we've come to a very very famous place here. It's called Shivraj Dhaba. और यहाँ का जो मुख्य खाने का सामग्री है उसका नाम है मसूर, अक्खा मसूर. So that's what we're eating. अक्खा मसूर with chapati. There's no bhakri apparently. There's bhakri but today there's no bhakri और बस इतना ही खा रहे हैं. गुड मॉर्निंग फ्रॉम कराड. आज की सुबह ठंडी थी इसलिए जैकेट इज़ ऑल्सो ऑन. बट अभी बहुत एक्साइटिंग प्लान्स हैं आज दिन के. अभी चाय पी है एंड नाउ विल गो टू सम एक्चुअली टू वेरी इंटरेस्टिंग प्लेसेस. वहाँ पहुँच के बताता हूँ उनके बारे में. बट देयर इज़ वन प्लेस विच मेक्स कराड द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड विच हैज़ दैट फीचर. सो स्टे ऑन and you'll know about that very interesting feature about Karad. So Amit, why is Karad so special to you? I moved to Karad in somewhere around 1994. मैं वाई में था और मैं कराड में मूव होने के बाद मेरा पूरा स्कूलिंग इधर ही हुआ है. सो इट्स वेरी गुड मेमोरीज ऑफ स्कूल्स एंड एवरीथिंग हियर. और मेरा सबसे अच्छा मेमोरी है कि फर्स्ट टाइम मैंने ज़िंदगी में रेल देखा तो कराड में देखा. इट्स वेरी स्पेशल प्लेस फॉर मी. Reasons why Karad is so famous is because of a very unique Sangam. तो यहाँ दो रिवर्स आके मिलती हैं and they meet head on. मतलब 180 डिग्रीज पे आके मिलती हैं. So Koyna river and Krishna river meet here and then they become Krishna river. पर उनका जो meeting point है वो बहुत ही अलग है. And apparently this is the only place in the world where this happens. तो दुनिया में कोई भी और जगह नहीं है जहाँ पे रिवर्स हेड ऑन मिलती हैं. T जंक्शन बनता है उधर, which is pretty interesting. Right on the Samadhi, there is another place which is of importance to the people of Maharashtra. यहाँ पे समाधि बनाई गई है जो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे महाराष्ट्र के, यशवंतराव चवान उनकी. So there's a beautiful park which is where I'm walking right now. और समाधि यहीं पर है. तो काफ़ी लोग यहाँ पे श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भी आते हैं. So that's one more reason to come to Karad and explore the place.
next we are going to this really beautiful bubbly or a stepwell which is located in the town itself. शहर के बिल्कुल बीच में ही है. So it's a short walk from the Samadhi. तो अभी वहाँ जाते हैं और देखते हैं stepwell कैसा है. Apparently ये पहले काफ़ी ख़राब हुआ करता था, but now it has been restored and it's quite pretty. तो इस वाव का नाम है नत्या रावलची विहिर. नत्या मतलब जिसकी चपटी नाक होती है. रावल इज़ द नेम ऑफ द गाय हु मेड दिस एंड विहिर इज़ एक्चुअली द स्टेपवेल. सो वाव जिसको बोलते हैं महाराष्ट्र गुजरात में. तो वी डोंट नो एग्जैक्टली इसकी हिस्ट्री कितनी पुरानी है, पर इट्स अ फ्यू 100 years old at least. It's been around for a very long time. Unfortunately आज ये वाव बंद है. So there is a door with a lock on it. So हम अंदर नहीं जा सकते unfortunately. So yeah, that's all we can see at the wow. Maybe we'll come again here some other day and I'll try and go inside and show you this place. But आज के लिए इतना ही काफ़ी. अभी नाश्ते का समय हो चुका है because Poonam has been asking for food for so long. So we are going to look for food now. कराड़ में खाने की चीज़ बहुत ही फेमस है. उसका नाम है अम्बोड़ी, which is basically like a dosa but not really a dosa because the raw material is different. आज नाश्ते में हम लोग कोशिश करेंगे वही खाएं ताकि थोड़ा सा और local Karad experience हो जाए. So yeah, food time now. So we actually managed to find a place which serves ambodi. तो अभी हम वो खाने जा रहे हैं. My first experience with eating that delicacy, that local delicacy. No, very nice. Genuinely very nice. So we are eating Amboli now. I think I got it completely wrong, but it seems a lot like Mysore dosa maybe, which is yellow in color with podi like chutney, and there's nariyal chutney. So a lot of interesting things. It's really nice. It's like a mix of chila and dosa. बहुत अच्छा है. It's really nice actually. This is Abba Cha, named after a person Abba, जो यहाँ पे आते थे और उनका खुद का एक स्पेशलिटी था कि ये ऐसा चाय बना के वो पीते थे. So it's like full of जिंजर. तो उनके बाद में ये रेस्टोरेंट में लाइक उनके मेमोरीज में ये एज अ डिश बना के एज एन मेन्यू आइटम रखा है. अबा चाह. आबा कोई बहुत फेमस आदमी था क्या? नहीं, ही वाज आई थिंक कुक. हाँ, हियर. So one of the other things that Karad is very famous for are actually the twin minarets of the Jama Masjid here, जो मार्केट के बीच में ही लोकेटेड है. It's a very beautiful structure. Unfortunately बहुत well preserved नहीं है, but we can see it from outside right now. So let's go and do that. आफ्टरनून में हम सनसेट देखने के लिए एक बहुत ही सीक्रेट लोकेशन में गए, जस्ट आउटसाइड द सिटी. So we have come to this place called Khodshi Dam. Actually अमित जब पहले आता था यहाँ पे कुछ भी था नहीं. अभी तो यहाँ काफ़ी सारा कंस्ट्रक्शन हो गया and we have these high voltage power lines also. So bit risky to fly here. Maybe we'll not fly here.
Also, dam typically I would say not the best place to go and fly a drone. But देखते हैं what we can do, or we'll just go back a little bit and fly from there because it is really really pretty. यहाँ पे river बहुत सुंदर है, तो it'll be quite nice to fly and show you guys what it looks like. Sun अभी होने ही वाला है थोड़ी देर में sunset, तो that'll make for good pictures. चलिए अभी देखते हैं आगे जाके where we can go and what we can do and where we can fly. तो हम पहुंच तो गए डैम पे, पर यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है फॉर न्यू डैम विच इज़ मोस्ट लाइकली गोइंग टू रिप्लेस द ओल्ड डैम्स. अभी तो यहाँ पे लोग अंदर आ रहे हैं इवनिंग वॉक्स वगैरह के लिए, सो आई कैन सी लॉट ऑफ पीपल ऑल्सो डाउन देयर वेयर द वाटर कम्स आउट. बट पानी बहुत कम है एज ऑफ नाउ, सो इंटरेस्टिंग जगह है. So we had a fantastic time flying the drone here. थोड़ा सा आगे हम लोग आ गए थे और वहाँ से हमने ऊपर उड़ाया चिड़िया को, and we had really amazing view of the Sangam from this side, like the best view of Sangam from this side. और बहुत अच्छे से दिखाई देता है अभी, you know, when you see it from top from this side how they meet at almost 180 degrees. Of course these are rivers, so they kind of go like, but the collision course is really like head on. So that's awesome. And Karad is such a surprise, right? There's so much to do in Karad. ये हमेशा बोलता रहता कुछ नहीं, but then we come to such amazing places and I'm like what the hell. This was really like घर की मुर्गी दाल बराबर ऐसा ही लग रहा है. और ये बहुत hidden सा spot है, so if you're not from Karad there's no way you will know where we were actually. I have no idea where I was. अभी next कहाँ जा रहे हैं हम? कुछ स्पेशल जगह? चाय. This is time for चाय. And कुछ खिलाने की बात भी हुई थी. खिलाने की, yes, we are going for Karad's very famous spot for street food. How many plates? ये आइसक्रीम है तो? नहीं गोला. हाँ. आज हम लोग आए हैं प्रीति घाट पे. ये यहाँ पे संगम एरिया है जहाँ पे कोयना रिवर और कृष्णा रिवर मिलते हैं. दे बिकम बिग कृष्णा रिवर. शाम को यहाँ पे बिल्कुल लाइफ अलग होती है. देयर इज अ घाट एरिया वेयर देयर इज लॉट्स ऑफ फूड स्टॉल्स. बहुत तरह का खाना मिलता है. ऑफ कोर्स यू गेट ऑल द रेगुलर फूड ऑल्सो, बट यू ऑल्सो गेट समथिंग वेरी स्पेशल विच यू फाइंड ओनली इन कराड. उसको अम्बोली बोलते हैं. सो वी गोना ट्राई दैट, द स्पेशल अम्बोली फ्रॉम कराड, एंड विल ट्राई द स्पेशल वड़ा पाव एज अमित सेज दैट्स वेरी स्पेशल हियर, एंड अदर थिंग्स. आई हैव नो आइडिया व्हाट वी ईटिंग, बट मोस्टली वेजिटेरियन स्टफ, एंड पानी पूरी ऑल्सो विच ही विल हैव, विच अपेरेंटली हैज़ हॉट वाटर. तो हम ये सब खाने वाले हैं, एंड आई विल शो यू अराउंड व्हाट्स हैपनिंग हियर. लेट्स एंड आवर ट्रिप ऑन अ हाई नोट विद फूड ऑन आवर प्लेट्स. How do you compare this to the Mumbai ka pani puri? No, sorry. Nobody beats Mumbai pani puri. Oh my god. कैसा है? आपको यहाँ पे फेमस है कट डोसा, लोनी डोसा, पाव भाजी, वड़ा पाव. यहाँ पर बॉम्बे रेस्टोरेंट का अम्बोली, गजानन का मिसल और साईनाथ का वड़ा पाव कराड़ में फेमस है.